एक बार फिर आपको लाहौर की सूरत हाल से आगाह करेंगे, जहां पर वकला और पुलिस के दरमियान में तसादुम हुआ। वकला एहतजाज कर रहे थे जो कचहरी है, सिविल अदालतें हैं, उनकी मुंतकिली के खिलाफ और दीगर वकला के ऊपर जो दहशतगर्दी के पर्चे या मुकदमात हुए हैं उसके खिलाफ, जिसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस की नफरी पहुंची जब लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मॉल रोड के ऊपर, तो आपस में तसादुम हुआ। कई घंटे हो गए हैं, अभी तक सूरत हाल वैसी बरकरार है। इस वक्त क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, क्या कंट्रोल हो पाए हैं हालात? अहमद फराज से जानते हैं। जी अहमद फराज, ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप अब तक? बिल्कुल जी, इस वक्त यहाँ जीपी चौक में मुकम्मल जो है वो कंट्रोल हासिल कर लिया है पुलिस ने, और यहाँ पर जो एहतजाजी वकला थे उनको मुकम्मल तौर पर यहाँ से हटा दिया गया है। और जिसका ये कहना है कि उनके जो एक एसपी और 2 SHO समेत 12 अहलकार जख्मी हुए हैं। इस वाक़े में 50 के लगभग जो है वकला उनको गिरफ्तार किया है, जबकि यहाँ पर जो एहतजाज किया जा रहा था उसके बाद अब ट्रैफिक को यहाँ पर खोल दिया गया है। डीआईजी और ट्रैफिक कामरान जो हैं उनका ये कहना है कि चौक को क्लियर करने के बाद तमाम इस रास्ते जो ट्रैफिक है उसको यहाँ से गुजारा जा रहा है। यहाँ पर अब किसी भी एहतजाजी वकला को यहाँ पे खड़े नहीं होने दिया जाएगा। जब से कुछ देर पहले जब यहाँ पे एहसन गूंज जो एक मारूफ वकील हैं, जब उन्होंने वकला से खिताब किया तो उनका ये कहना था कि बार और बेंच की कोई लड़ाई नहीं है, हम हर सूरत में आज इस हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे। उनका जब उन्होंने ये कहा कि मैं आगे हूँ और आप सब मेरे पीछे हैं, उसके बाद जब तमाम वकला उनके पीछे जीपीएस चौक के गेट पर पहुंचे हैं तो उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की है, तो उन्होंने पुलिस पर दोबारा पथराव किया है। पुलिस ने उनको रोका तो यहाँ पर दोबारा शेलिंग हुई है। ये 3 घंटे तक जो यहाँ पर जंग चल रही थी, जो यहाँ पर आंख मुचोली का खेल जारी था, ये उसका ये आखिरी पार्ट था जिसमें अब वकला जो है मुकम्मल तौर पर उनको यहाँ से हटा दिया गया है। वकला मुंतशिर हो गए हैं, कई वकला को यहाँ से गिरफ्तार किया गया है और उनको जेल में। अच्छा अहमद, इससे पहले भी हमने देखा कि वक्फे से मुंतशिर कर दिया जाता था, लेकिन फिर इकट्ठे हो जाते थे वकला एहतजाज करने के लिए, और मुतालबा यही रहा कि जब तक उनको इजलास नहीं करने दिया जाता जनरल हाउस का, वो मुंतशिर नहीं होंगे, एहतजाज कॉल ऑफ नहीं करेंगे। इस वक्त उनका क्या मौक़िफ़ है? देखिए, अब तो जो पुलिस ने आखिरी यहाँ पे जो ऑपरेशन किया है उसके मुताबिक तो यही है कि वो अब किसी को उन्होंने इकट्ठे नहीं होने देना। उनका मुतालबा तो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, यही था कि जब तक उनको अंदर नहीं जाने दिया जाएगा और जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे वो यहाँ पे रहेंगे। लेकिन जब अब पुलिस ने जो ऑपरेशन किया है उस ऑपरेशन में जो गिरफ्तारियां हुई हैं, जो पुलिस ने स्ट्रेटजी अपनाई है, उसके बाद अब यहाँ पे वकील यहाँ पे एहतजाज करने के लिए नहीं मौजूद है। चौक जीपीएस चौक जो पिछले 3 घंटे से मैदान जंग का नक्शा पेश करा था, अब मुकम्मल तौर पर उसको ट्रैफिक के लिए बहाल कर दिया गया। माल रोड पर जो ट्रैफिक थी उसका बुरा तरीन हशर था, क्योंकि तो हम अब ये कह सकते हैं कि पूरी तरह से मामूल पर मामलात आ चुके हैं। इस वक्त ट्रैफिक वहां पर रवां दवा है, सब वकला मुंतशिर हो गए हैं, पुलिस ने कंट्रोल संभाल लिया। जी, ट्रैफिक यहाँ पे बिल्कुल पुलिस यहाँ पे मौजूद है, और एक पुलिस हुकाम का ये कहना है कि जब तक मुअज़्ज़िज़ जज साहबान हाई कोर्ट से अपने घरों को नहीं चले जाते तब तक पुलिस यहाँ पे मौजूद रहेगी, क्योंकि आज जो यहाँ पर सिक्योरिटी दी जा रही थी वो खास तौर पर अदालत को और इन जजेस को ही सिक्योरिटी दी जा रही थी। इसलिए जब तक वो अपने घरों को नहीं चले जाएंगे तब तक पुलिस की ये तमाम नफी जो है। और हाई कोर्ट के अंदर क्या सूरत हाल है? क्या वहां पर अभी भी वकला मौजूद हैं, एहतजाज कर रहे हैं, और क्या इजलास की जो शर्त थी उनकी, उसके ऊपर क्या अपडेट है? देखिए, जो हाई कोर्ट के अंदर मौजूद थे वो कुछ सीनियर वकला मौजूद थे। अंदर तो ऐसा कोई एहतजाज नहीं किया जा रहा था, ना ही अंदर कोई आज अदालत खुली, ना ही अंदर कोई काम हो रहा था, क्योंकि अमला तो अंदर मौजूद था लेकिन अंदर काम नहीं हो रहा। लेकिन अहमद फराज, जो सदर लाहौर बार का कहना था कि हाई कोर्ट में जनरल हाउस का इजलास किए बगैर वापस नहीं जाएंगे, इस वक्त वकला का क्या मौक़िफ़ है इस मुतालिक? बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, मुनीर भट्टी ने ये कहा था, लेकिन उन्हें अंदर जैसे अंदर तो वकला नहीं इजलास करना था, जब वकला को ही अंदर नहीं जाने दिया गया तो इजलास उन्होंने किससे करना था? तमाम जो क़यादत थी, तमाम जो वकला की जो लीडरशिप थी वो भी भाग गई है, वो तो गिरफ्तार ही नहीं हुए। कुछ वकील जो इक्का दुक्का वकील थे 40-50 उनको इस वक्त मुंतशिर कर दिया गया है। ठीक है अहमद फराज, आपसे मजीद भी अपडेट लेंगे, हमारे साथ ही रहेगा। नवीन अली ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे ज़रा ये जानते हैं सारी सूरत हाल। नवीन, आप बताइएगा, इस वक्त सूरत हाल जैसे अहमद फराज हमें बता रहे थे, पुलिस ने कंट्रोल तो संभाल लिया है, लेकिन वकला जो कह रहे थे कि हम जनरल हाउस इजलास के बगैर वापस नहीं जाएंगे, उनका इस वक्त क्या मौक़िफ़ है, क्या कहते हैं वो? जी बिल्कुल, ये वकला अपने इस मुतालबे के ऊपर बिल्कुल अटल थे कि उन्होंने जनरल हाउस के इजलास के बाद जो है बगैर जो है वो यहाँ से नहीं जाना। लेकिन वहाँ पर जो है पुलिस की बारी नफरी मौजूद थी और पुलिस खासी कोशिश कर रही थी कि वो उनको मुंतशिर कर दे। एटलीस्ट जो है आज जो है ये इजलास ना हो सके, आइंदा आने वाले दिनों में कोई नया शेड्यूल जो है इस इजलास का
تیار کر لیا جائے، جس کے اوپر کافی دیر تک جو ہے ان کے مذاکرات بھی چلتے رہے اور ان کے درمیان جو ہے اس چیز کے اوپر آمادگی کے لیے بھی جو ہے کافی دیر کوشاں رہی پولیس بھی اور دوسری طرف وکلا بھی. لیکن فی الحال جو ہے یہ جنرل ہاؤس کا جو اجلاس ہے یہ وہ ممکن ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، کیونکہ تو اب اگلی حکمت عملی کیا ہے وکلا کی، کچھ پتہ چل سکا ہے ہمیں؟ ابھی جو ہے سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے جو ہے وہ کی کال دی ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ تمام تر جو وکلا ہیں ان کے اندر جو ہے الگ الگ طرح سے جو ہے وہ ریلیاں نکالیں گے پورا من انداز سے، اور جو ہے جو یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس کو مدعا بنا کر جو ہے پورا من طریقے سے تمام تر عدالتوں کے اندر ملک بھر میں جو ہے نہ صرف ہڑتال کی جائے گی بلکہ ریلیاں اور احتجاج بھی کیے جائیں گے. اچھا احمد فراز، آپ سے یہ جاننا چاہیں گے اب تک کتنے وکلا کو حراست میں لیا گیا؟ تقریباً 50 سے زائد وکلا کو حراست میں لیا گیا. جی بالکل جی، یہ آپ جو آخری یہاں پہ جو آپریشن ہوا ہے اس میں جس طرح پولیس نے جو گرفتاریاں کی ہیں 3-4 یہاں پہ جیل وین موجود تھی، جس طرح مختلف راستوں سے مختلف مقامات سے جو وکلا کو پکڑا ہے پولیس کا یہ کہنا ہے پولیس شام کا تو 50 کے لگ بھگ وکلا جو ہے وہ گرفتار ہوئے ہیں، لیکن ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ قیادت میں سے کوئی بھی گرفتار نہیں ہوا، صرف یہ وکلا وہ وکلا ہے جو احتجاجی وکلا تھے ان کو گرفتار کیا گیا اور ان کو گرفتار کر کے نامعلوم مقامات پہنچا دیا گیا. اچھا نوین، اس سے پہلے ہمیں بڑی اہم خبر دے رہی تھی، نوین ایک دفعہ ہمیں پھر بتائیے گا، آپ بتا رہی تھی کہ کوئی لاہور بار کی طرف سے اعلامیہ جاری ہوا ہے، نوٹیفیکیشن جاری ہوا ہے جس میں آگے کا لائحہ عمل بتایا گیا ہے؟ فی الحال ابھی تک جو لاہور بار کی طرف سے کوئی نوٹیفیکیشن اور اس طرح کی فیصلہ جاری نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن ایسن بون ہے جو کہ اس احتجاج میں باقاعدہ طور پر شریک تھے اور وہ بھی اس نوٹیفیکیشن کے خلاف سراپا احتجاج سے اپنی وکلا برادری کے خلاف انہوں نے اعلان کیا ہے، صرف اعلان کیا ہے اور وکلا برادری کو کہا ہے کہ متحد ہو ہے پورے ملک میں اس نوٹیفیکیشن کے خلاف نہ صرف ہڑتال کرے، عدالتوں کی کارروائیوں کوئی، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا گیا ہے کہ کوئی بھی وکیل جو ہے کسی بھی کیس کی ہیئرنگ کے لیے عدالت میں نہیں جائے گا، یعنی مکمل طور پر ہڑتال ہوگی، احتجاج کیا جائے گا اور پورے ملک کے اندر جو ہے ریلیاں دی جائیں گی. ابھی تک لاہور بار کی طرف سے کسی قسم کی کوئی پریس ریلیز اور اعلامیہ اس طرح سے جاری نہیں کیا گیا، لیکن سابق سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو احسن بو انہوں نے یہ اعلان کر دیا ہے. جی اچھا، کچھ بیک گراؤنڈ بھی ایک بار پھر بتائیے گا وہ ناظرین جو ابھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. سول عدالتوں کی منتقلی کا معاملہ تقریباً 4 ماہ پرانا ہے اور یہ وکلا پر دہشت گردی کے مقدمات کہاں کہاں اور اس سے متعلق جو درج ہوئے ہیں اس کے خلاف وکلا احتجاج بھی کریں، اس کا بیک گراؤنڈ بتائیں. دیکھیے جی، 9 مئی کے سانے کے بعد جو ہے وکلا بھی اس سانے کے اندر شریک تھے اور اس کے بعد جو ہے بہت سارے وکلا بھی جو تھے جن کے اوپر دہشت گردی کی صفات لگائی گئی تھی اور دیگر کارکن تھے کہ وکلا کو بھی انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں پیش کیا گیا ہے. نو ڈاؤٹ کہ ان میں سے بھی کچھ وکلا جو ہے وہ رہا ہو گئے تھے، اس کے باوجود ابھی بھی بہت سارے وکلا کی تعداد ہے جو کہ تو اس کے اوپر آج احتجاج ہو رہا تھا. اچھا نوین، کوئکلی یہ بتا دیجیے گا کیا آج کے دن میں وکلا کی کوئی حکمت عملی ہے دوبارہ سے احتجاج کرنے کی؟ نہیں، فی الحال تو صرف اور صرف جو ہے سابق صدر سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے جو تھے احسن بون صاحب انہوں نے جو ہے اعلان کیا ہے، لیکن لاہور اس کے علاوہ ابھی تک کچھ نہیں ہے. بہت شکریہ نوین علی. احمد فراز ہمارے نمائندگان ہمیں لاہور سے اپڈیٹ کر رہے تھے اور احمد فراز ہمیں بتا رہے تھے کہ وہاں پر بننے والی اس وقت جو صورتحال تھی کئی گھنٹوں تک مال روڈ کے اوپر ہائی کورٹ کے سامنے جی پی او چوک پر جو وکلا اور پولیس کے درمیان میں تصادم رہا اس کو اب کنٹرول کر لیا گیا ہے، ختم کروا دیا گیا ہے، منتشر ہو گئے سارے وکلا اور پولیس نے کنٹرول سنبھال لیا ہے. اور اپڈیٹ یہ بھی ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے آئی جی پولیس کو ہدایت کی کہ وہ وکلا کے خلاف طاقت کے استعمال سے گریز کریں. سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر اپنے پیغام میں مریم نواز نے کہا کہ وکلا اپنے معاملات لاہور ہائی کورٹ کے ساتھ خوش اسلوبی سے حل کریں، لاہور کے شہریوں کے تحفظ کے لیے محاذ آرائی سے گریز کیا جائے. دیگر خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ شیر افضل مروت نے پاکستان تحریک انصاف کی موجودہ قیادت کے ساتھ کام نہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. اڈیالہ جیل کے باہر گفتگو میں شیر افضل مروت نے کہا کہ عمر ایوب اور شبلی فراز نے کل کی طرح آج بھی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات ہونے نہیں دی ہے. سعودی سفیر کے اعتراض کی بنیاد پر چیئرمین پی ایس سی کی نامزدگی ختم کر کے تذلیل کی گئی. اس عہدے سے مزید کوئی دلچسپی نہیں ہے. سپرنٹینڈنٹ جیل اسد وڑائی نے خود مجھے کہا فون پہ جو 6 افراد کی میٹنگ ہے اس کے بعد آپ کی ملاقات کرائیں گے، لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ آج ملاقات نہیں ہو سکتی ہیں، خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ کل آ جائیں. آج میں گیا آپ کی میڈیا کے
रिपोर्टर मौजूद थे, उनके सामने उन्होंने कहा जी कि 15 मिनट बाद आपकी मुलाकात है। यूँ 15 मिनट करके सुपरिटेंडेंट जेल ने आज मेरी फिर मुलाकात नहीं कराई कि मेरा मिलना इंतहाई ज़रूरी था। और जेल सुपरिटेंडेंट के ताउन से शिबली फराज और उमर अयूब ने मेरी ये मुलाकात नहीं होने दी है। अगर सऊदी हुकूमत को प्रॉब्लम है तो मैं खान के लिए कतई प्रॉब्लम पैदा नहीं करूंगा, तो लिहाजा खान साहब मुझे इस रेस से आउट ही समझे। मुझे कोई ऐसी कमेटी की चेयरमैनी ही नहीं चाहिए जहां सऊदी हुकूमत का ये तकाजा हो कि वो कहें कि जनाब इनको आप न बनाएं। क्या ये तजलील नहीं है कि एक शख्स को आप नेम कर देते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी का, 2 महीने से उसका नाम चलता है, अचानक आप उसको कहते हैं कि जनाब सऊदी सफीर का मैसेज आ गया, हम आपको कंसीडर, या पॉलिटिकल कमेटी कही थी हम आपको कंसीडर नहीं करते। ये कमेटी क्या चीज़ है और कौन कमेटी नहीं थी, असल बात बेवकूफ़ी की थी। ये बेवकूफ़ कर रहे थे मुझे और इन्होंने किया, तो लिहाजा मैं बतौर एहतजाज इन लोगों के साथ काम करने से इनकार करता हूँ। और अभी आपको बताएं, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए पीटीआई ने शेख वकास अकरम का नाम फाइनल कर लिया है। इसकी तफसील जानते हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शबीर डार से। जी शबीर, बताइए। जी, अडियाला जेल में आज 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस की समाअत थी और समाअत के बाद जब पीटीआई के सीनियर रहनुमाओं से हमारी बात हुई तो हमने उनसे पूछा था कि पीएसी के चेयरमैनशिप के हवाले से कोई फैसला हुआ है, तो उन्होंने कहा कि जो पॉलिटिकल कमेटी तश्कील दी गई थी उसमें ये फैसला किया गया है कि जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए पीटीआई ने शेख वकास अकरम का नाम फाइनल कर लिया है और पॉलिटिकल कमेटी 1-2 रोज में शेख वकास अकरम का नाम स्पीकर को भेजेगी। और पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए अली मोहम्मद खान का नाम भी जेर बहस आया था। कमेटी ने शेख वकास अकरम का नाम हतमी तौर पर फाइनल कर लिया है। बानी पीटीआई ने भी शेख वकास अकरम के नाम की मंजूरी दे दी है। इस मौके पर चूंकि शेर अफजल मरवत भी आज बानी पीटीआई से मिलने के लिए अडियाला जेल आए थे, लेकिन उनको मिलने नहीं दिया गया और गुज़श्ता रोज भी उनको मुलाकात नहीं करने दी गई थी। इस हवाले से भी हमारी कुछ रहनुमाओं से बात हुई तो उनका कहना था कि बानी पीटीआई ने खुद शेर अफजल मरवत से मिलने से इनकार कर दिया है और शेर अफजल से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनकी और बानी पीटीआई की मुलाकात में जो रुकावट है वो उमर अयूब और शिबली फराज है। ये दोनों नहीं चाहते कि मैं चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनूं। उन्होंने कहा कि मुझे मेरी बेतौकीरी की गई है, मुझे बेवकूफ़ किया गया है, लिहाजा मैं शिबली फराज और उमर अयूब की क़यादत से इनकार करता हूँ। ठीक है जी, शबीर डार हमें तमाम सूरत हाल से आगाह कर रहे थे और फिर अफजल मरवत का बयान भी बता रहे थे या उनका मौक़िफ़ बताए थे। बहुत शुक्रिया शबीर। अभी बराह रास्त देखिए, इस्लामाबाद में बरतानवी हाई कमिश्नर कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही हैं। National education emergency for Pakistan, delivering that vision which we can come in and support. There couldn't be a better moment, of course, to remind us of the famous quotation by Mr. Mahmoud Ali Jinnah when he said, shortly after the founding of Pakistan, he said, "Education is a matter of life and death for Pakistan. The world is progressing so rapidly that without the requisite advance in education, not only shall we be left behind others, but we may be wiped out altogether." We are living today in a highly volatile, climate-vulnerable world. Pakistan, with 60% of the population below the age of 30, is at a crossroads where it needs to make tough choices so that children and youth, one of its greatest assets, have the education and skills to help Pakistan stand tall in the world. But we know that Pakistan is facing a real crisis in education. Recent evidence shows that although the proportion of out-of-school children in Pakistan has decreased, the total number has grown to, as we've heard, over 26 million. Pakistan is home now to more out-of-school children than any other country in the world. Bringing those children back to school should be our collective moral mission. But it's not just a moral mission, it's also an investment in their future and an investment in Pakistan and therefore the world's future. Pakistan is not alone in these challenges. Globally, the number of out-of-school children and youth has risen by 6 million since 2021 and now stands at 250 million. Around 70%, as we've just heard from my friend in UNICEF, around 70% of 10-year-olds in low and middle income countries cannot read or understand a simple text. Overall, progress against Sustainable Development Goal number 4 is far from satisfactory.
which is why today's conference for a call for urgent action to fast-track progress in Pakistan is absolutely so vital, and why the leadership, Mr. Prime Minister, Education Minister and those behind you, is absolutely so vital. It's important to take steps in parallel to create the right conditions. Firstly, the schools will need to be made ready to receive and retain all of the children, including the out-of-school children and youth. This will require increasing education spending, recruiting for vacant teacher posts, finding cost-effective transport solutions, filling gaps in infrastructure such as through digital technology, multiple shifts at schools and public-private partnerships. And I was inspired, as I hope many of you were before you came into this auditorium today, to visit some of the stalls outside where we were learning about some of the innovative things that Pakistan is doing to deliver on some of those aspects. Many out-of-school children are, of course, also overage and need alternative solutions to formal schooling. Initiatives like the Punjab Roadmap will provide better tools for accelerating and measuring progress. Secondly, to retain children in schools, tackling learning poverty is fundamental. Pakistan cannot afford to have an education system where 8 in 10 children cannot read a simple paragraph by the age of 10. An investment in catch-up learning programmes, reading campaigns and better pedagogy will be vital, as I think we're about to hear. As your bilateral partners, Mr. Prime Minister, Chief Ministers, Education Ministers, we call on you to make a commitment to also take steps to ensure that by 2030, every child is able to read and write by the age of 10. We call on the passionate youth and community members who can teach in step to achieve the goals of emergency education. Thirdly, I would like to stress that the highest performing education systems in the world are also the most inclusive. That is, they support the most disadvantaged students to learn. Girls, children living in poverty and conflict, those with a disability and those from religious minorities will need greater attention. And we can pay special attention to these groups in enrolment and learning campaigns. I'd like to congratulate you, Mr. Prime Minister, specifically for continuing to show your strong commitment to education for all, for which you are globally known. I'd also like to commend the Federal Minister, Dr. Khalid Maqbool Siddiqui, the Federal Secretary of Education, and his team for making this an excellent initiative with such passion. It is extremely vital for the federal tier to work together with the Chief Ministers, Provincial Education Ministers and their teams to achieve the objectives of this education emergency. Learning from the huge success in polio eradication, the formation of a national education task force will provide the much-needed ground for seamless coordination. We also urge for a more effective role for the Council of Common Interests to bring together the federating units. And to make the major impact required, we will all need to continue to pull in the same direction. For my part, I can assure you that the UK will continue with our unwavering end-to-end support to action in the education sector. And I'm confident that other partners too will also put their best feet forward. What you are delivering today, Mr. Prime Minister, is that vision that we can all get behind and support, not just your partners in the development community, but I hope the whole of Pakistan. No child should be left behind. Thank you. बरतानवी हाई कमिश्नर इस्लामाबाद में तालीम से मुतल्लिक़ कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थीं।